हे फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू एकांश एकेडमी। तो ये हमारा चौथा वीडियो है रोटेशनल मोशन पे। और तीसरे वीडियो में हमने क्या कवर किया? तीसरे वीडियो में हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कवर किया, हमने टॉर्क क्या होता है वो समझा, हमने सेंटर ऑफ मास समझा। हालांकि वो हमने उसका स्कोप उस रोटेशनल मोशन तक ही रखा था। विल बी कवरिंग सेंटर ऑफ मास एंड सम अदर वीडियोस। और हमने एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कवर किया था, जिसमें हमने व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ कवर किया। ये फॉर्मूला डिराइव किया वी मैक्स। तो ये डिराइव करते हुए वी कंसीडर्ड कि बाइक जो भी व्हीकल है उसका सेंटर ऑफ मास इज एक्चुअली फॉलोइंग ऑन द प्लेन ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा कभी होता नहीं है। वी आर अबाउट द सर्कुलर पाथ, हम उस सर्कुलर पाथ के ऊपर होते हैं। तो दैट्स व्हाई वी टुक एन एग्जांपल ऑफ अ बाइक जिसमें सेंटर ऑफ मास वाज एट अ हाइट n एंड वाज एट अ हाइट k। और उसके बेसिस पे जब एक हाइट पे आने की वजह से जो टॉर्क लगता है, तो टॉर्क जो होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मुझे बाहर फेंकता है, तो उसको काउंटर करने के लिए आई हैव टू टिल्ट माय सेल्फ। तो उससे कितना टिल्ट करेगा, वी derived using this theta, we derived this formula theta is equal to tan inverse dr by d square. So today we will continue some another examples of applications of uniform circular motion. आज हम लोग कुछ और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे कुछ और एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला चीज हम देखने वाले हैं वो है वॉल ऑफ डेथ। वॉल ऑफ डेथ आपको पता होगा। वॉल ऑफ डेथ में बेसिकली एक राइडर होता है, वो एक सिलेंड्रिकल एक ऐसा पाथ होता है, सिलेंड्रिकल सर्कुलर पाथ होता है, जिसके अंदर वो बाइक लेके ऐसा सीधा गोल घूमता है, मतलब ऐसे गोल घूमता है। तो हम उसके पीछे का फिजिक्स देखेंगे, उसके पीछे का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम उसमें क्या क्या डिराइव कर सकते हैं वो देखेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी दिस इज द, ये हमारा वो सिलेंडर है जिसके अंदर वो व्यक्ति परपेंडिकुलर टू दिस वॉल को गोल घूम रहा है। ठीक है, इस वॉल के अराउंड ऐसे 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 ऐसे, अगर ये वॉल ऐसा है तो वो अपनी गाड़ी लेके ऐसे 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 घूम रहा है। तो हमें ये देखना है, अभी हमें जो डिराइव करना वो ये है कि व्हाट वुड बी द मिनिमम वेलोसिटी जिसके साथ उसे ट्रैवल करना होगा। टेंजेंशियल वेलोसिटी उसका मिनिमम कितना होना चाहिए जिसके साथ उसने ट्रैवल कर सर्कुलर पाथ परफॉर्म करना चाहिए, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना चाहिए, सो दैट वो नीचे गिरे नहीं। तो व्हाट वुड बी द मिनिमम वेलोसिटी दैट वी हैव टू सी। ठीक है, तो एज यू कैन सी मैंने इस इंस्टेंस पे उस व्हीकल को यहाँ पे कंसीडर किया। ओनली वन पॉइंट में मैं उसको कंसीडर कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, तो एज यू कैन सी इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम है उसमें देयर इज अ वेट mg डाउनवर्ड, देयर इज अ नॉर्मल रिएक्शन। हम कोई भी चीज को अगेंस्ट अगर हम पुश करते हैं तो वी गेट अ नॉर्मल रिएक्शन। तो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। और सिंस ये वेट mg नीचे की तरफ है, तो मेरा जो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो एज यू कैन सी इस सर्कुलर मोशन को होने के लिए, एज यू नो दैट कोई भी कोई भी सर्कुलर मोशन होने के लिए देयर हैज टू बी सम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस केस में दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट माय नॉर्मल। तो लेट्स इक्वेट दिस। तो इस केस में मेरा नॉर्मल वुड बी इक्वल टू माय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सिंस इट इज परफॉर्मिंग करेक्टली ऑन दैट सर्कुलर पाथ, दैट इज m omega square by omega square r. I will convert v r I will convert omega to v, that would be mv square by r. ठीक है, so n equals to my centrifugal force. ठीक है, now fs is equal to mg. So we know the formula for frictional force जो मेरा ऊपर लगने वाला है, that is fs is less than equal to mu s n। तो मुझे मिनिमम वेलोसिटी निकालना है, तो मुझे मेरा जो फ्रिक्शन रहेगा दैट हैज टू बी मैक्सिमम। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट इट हियर, आई विल जस्ट पुट थिंग्स ओवर हियर एंड देन विल सी व्हाट वी गेट। ठीक है, सो आई विल गेट mg less than equal to mu s, that is coefficient of static friction, into mv square by r. My mm got cancelled out and I'm left with v square is greater than equal to mu
will be R upon mu s. ठीक है, RG upon mu s. ठीक है, RG upon mu s. So V would be greater than equal to under root RG upon mu s. तो V is greater than or equal to, तो जो V minimum रहेगा that would be at equal to, right? तो minimum velocity जो लगेगा for this vehicle to perform a uniform circular motion on a cylindrical wall of depth, ठीक है, तो उसके लिए मेरा V minimum would be under root RG by mu s. ठीक है, तो this becomes our ninth formula. ठीक है, ओके. सो अभी हम लोग तीसरा एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेंगे. ओके, सो सेकंड एप्लीकेशन विल बी व्हीकल ऑन अ प्लैंक्ड सर्कुलर पाथ. तो सो दिस इज द सर्कुलर पाथ, ठीक है, जिसके ऊपर एक व्हीकल है. वी आर कंसिडरिंग दिस व्हीकल एज अ पॉइंट व्हीकल relying on the circular path, ठीक है, and in this scenario we are considering कि the road is very smooth, there is no friction at all, ठीक है. तो इस केस में to make this vehicle perform the circular motion, then of course there is a need of acceleration, centripetal acceleration, नहीं तो फिर वो घूम नहीं पाएगा, ठीक है. तो उसे सेंट्रिपिटल, उस बॉडी को सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहां से मिलेगा? तो as you can see इस डायग्राम से, इसका जब हम एफबीडी बनाएंगे तो एक mg नीचे गिरा और एक नॉर्मल एक दिस रोड इज प्लान्ड एट एन एंगल थीटा, ठीक है. सो दिस थीटा इज इक्वल टू दिस थीटा, ठीक है, बाय बेसिक ज्योमेट्री, दैट इज सिंस इट इज परपेंडिकुलर, ठीक है. तो what would be the projection of this n on this axis? It would be n cos theta, and the projection of this n on this axis would be n sin theta. तो ये जो n sin theta है, this is the force, this is the factor responsible for the circular motion, which is giving the centripetal acceleration or centripetal force, ठीक है. So we are not considering the friction, ठीक है. So let's equate this now, ठीक है. As you can see, n cos theta would be equal to my mg. N cos theta would be equal to my mg, and n sin theta would be equal to my centrifugal force, that is mv square by r. Now if we divide these two things, we will get n cos theta divided by n sin theta is equal to mg by mv square. This r will go up, ठीक है, mm will get cancelled, so it would be cot theta is equal to gr by v square, or tan theta is equal to, if I do the reverse, I will get tan theta is equal to v square by gr, ठीक है, और v square is equal to under root v is equal to under root tan theta into gr, ठीक है. So this is the safe speed through which this vehicle can perform a circular motion, okay. So the 10th formula is Vs is equal to gr times tan theta. Now since g is constant, r is constant, theta is constant, ठीक है, so this is a constant velocity, ठीक है. So Vs is equal to, this is the safest velocity through which this vehicle can perform a uniform circular motion. Now if we bring the friction into the picture, what would be the theta here? The theta would be tan inverse of
v square by gr from here to here, ठीक है। तो जो थीटा लगेगा हमको एक सेफ स्पीड पे चलाने के लिए, जो थीटा जो प्लान करना है हमें पाथ को, दैट वुड बी tan इनवर्स ऑफ v square by gr। Now we'll introduce friction, ठीक है। So my safe speed is Vs is equal to tan theta into gr. Okay. Now if I want to calculate, मुझे अभी कैलकुलेट करना है कि मेरा मिनिमम स्पीड क्या हो सकता है, ठीक है। मुझे मैक्स और मिनिमम स्पीड कैलकुलेट करना है। लेट्स से इस व्हीकल को सेफ स्पीड तो ये है, बट मिनिमम स्पीड से अगर मुझे घुमाना है तो मैं कैसे कर सकता हूं। तो नाउ लेट्स इंट्रोड्यूस द फ्रिक्शन इन दिस केस। और अभी हमको कैलकुलेट करना है कि व्हाट वुड बी द मिनिमम वेलोसिटी एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी द व्हीकल कैन टेक इन ऑर्डर टू परफॉर्म द सर्कुलर मोशन। तो द मिनिमम वेलोसिटी के केस में द फ्रिक्शन वुड बी अपवर्ड। व्हाई? because the n sin theta will be more than my centrifugal force, ठीक है। my centrifugal force CFF क्या होता है normally is equal to mv square by r। तो in this case my n sin theta would be more than my centrifugal force। तो जब भी कोई resultant force जिस डायरेक्शन में ज्यादा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरा फ्रिक्शन होगा, ठीक है। so that's why my friction will be here। so my friction will be here, that is Fs, ठीक है। तो Fs का component along this axis would be, now this is also theta, would be Fs cos theta, and Fs का component along this axis would be Fs sin theta। now we'll draw the FBD again, ठीक है। तो इस FBD का हम लोग ये बनाते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं along x axis y axis। so it would be n cos theta plus Fs sin theta divided would be equal to mg, ठीक है। now Fs is nothing but my mu times mu ns। so f n cos theta plus mu s n sin theta is equal to mg, equation number 1, that is along the y-axis। now along the x-axis it would be n sin theta minus Fs cos theta would be equal to mv square by r, ठीक है। now if we replace Fs by ठीक है। now this becomes my equation number 2। now if I divide equation number 1 with 2, I'll get n cos theta plus mu s sin theta divided by n sin theta minus mu s cos theta would be equal to mg by mv square by r। so this will go up and then will get cancelled out and then will get cancelled out। इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं, so it will become sin theta minus mu s cos theta by cos theta plus mu s sin theta would be equal to v square by gr। now if you divide both numerator and denominator by cos theta, I will get
tan theta minus mu s divided by 1 plus mu s tan theta is equal to v square by gr, or v square is equal to gr times tan theta minus mu s divided by 1 plus mu s tan theta, or v is equal to under root gr. This would be v minimum, tan theta minus mu s by 1 plus mu s tan theta. Now this becomes our 12th formula. So this is the minimum velocity. So this is the minimum velocity. ये minimum velocity इस vehicle को लगेगा in order to perform the circular motion. इससे नीचे ये velocity नहीं जा सकता. In case अगर ये इससे नीचे गया तो car will come down. इससे कम velocity होगी तो कार नीचे की तरफ जाएगा. ठीक है? So this is our 12th formula. That is V minimum is equal to gr tan theta minus mu s divided by 1 plus mu s tan theta. Okay, so this is the minimum velocity. In a similar way, we can find the maximum velocity also through which the vehicle can travel. So let's calculate that. Okay. So as you can see आप जैसे आप देख सकते हो इस डायग्राम से कि जब मेरा वेलोसिटी मेरा सरफेस वेलोसिटी से ज्यादा रहेगा उस टाइम पे मेरा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा वो ज्यादा रहेगा, तो उस केस में मुझे फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लगेगा. तो जब मेरा फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा तो अलोंग दिस y एक्सिस मेरा जो कंपोनेंट रहेगा दैट वुड बी फ्रिक्शनल फोर्स का जो प्रोजेक्शन रहेगा दैट वुड बी fs sin थीटा, और जो x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट रहेगा दैट वुड बी माय fs cos थीटा. और जैसे इसके पहले वाले इसमें हमने देखा था कि n का प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस वुड बी n cos थीटा एंड n का प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस वुड बी n sin थीटा. तो इस FBD के बेसिस पे अगर मैं इक्वेशंस बनाऊं तो इक्वेशंस वुड बी लाइक n sin थीटा प्लस fs cos थीटा would be equal to my centrifugal force, that is mv square by r. ठीक है? Now my fs is my frictional force has to be maximum in order for me to have a maximum velocity. ठीक है? So in that case my frictional force would be equal to mu s n. So it would become n sin theta plus mu s n cos theta is equal to mv square by r. ठीक है? This becomes my equation number 1. Now along this axis, ठीक है, along y axis it would be n cos theta, ठीक है, would be n cos theta minus fs sin theta would be equal to n cos theta minus fs sin theta would be equal to my mg. ठीक है? ठीक है. So here again I will replace fs with mu s n. So it will be n cos theta minus mu s n sin theta is equal to mg. Now this represents my equation number 2. If I divide equation number 1 and 2, I'll get n sin theta plus mu s cos theta divided by n cos theta
minus mu s sin theta, ठीक है, इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r और नीचे mg, तो mgr, mm will get cancelled and n will get cancelled, and if I divide again by cos theta, both numerator and denominator on this side, it will become tan theta plus mu s will become 1, cos theta by cos theta would become 1, divided by this would become 1 minus mu s tan theta, ठीक है, is equal to v square by rg, ठीक है. Now I can write this as v square is equal to rg times tan theta minus mu s divided by 1 minus plus what the tan plus. now v square rg tan theta plus mu s divided by 1 minus mu s tan theta, ठीक है, तो v max will be equal to under root rg tan theta plus mu s divided by 1 minus mu s tan theta. So this becomes my 13th formula. So ये मेरा maximum velocity रहेगा, which would be which इससे ऊपर मैं जाया तो इससे ऊपर अगर मैं गया तो I would come out of that circular motion, ठीक है. So this is my V max. So write it here. This becomes my third formula. Okay, so that's it for this vehicle on a planned circular path. So using these formulas in next lectures, probably next to next lecture, we'll be solving sums. So that's it. Thank you.